So when we look at this, पहली चीज जो मैंने बताई थी वहां न्यूज ऑन द लेफ्ट साइड यू सी. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, जस्ट आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क ऑफ हाउ स्टॉकेज लुक्स लाइक. On the left side you have the menus of what all things are there, and on the center side you have specific output. जब भी आप लेफ्ट में कुछ क्लिक करते हो, सेंटर में उसका आउटपुट आ जाता है. तो इफ वी क्लिक ऑन मार्केट के अंदर में न्यूज सेक्शन, कैन वी जस्ट क्लिक ऑन न्यूज सेक्शन, तो सेंटर में द न्यूज सेक्शन अपीयर्स. ओके, लेफ्ट साइड इज द मेन्यू, central side is the actual output of data. As simple as that. Okay, so in news you have news and announcements. News क्या है? News also is available in huge quantity. If I open an Economic Times, I have to go through 25 pages to understand each news items. Do we have that much time every morning to go through each and every line of a newspaper? Very difficult. So what we did is, we set up an internal research team जिसका काम है कि आप सारी न्यूज पढ़ोगे और जो relevant न्यूज है उसको one line में you will summarize and put it on the app. So you will find no political news here, no sports news here, only those news items which are directly related to a stock or a sector that will get captured here. So this is the list of news that has been published on 13th of September. And each of these news you can click and directly jump to the company's data. Okay, so if I'm looking at a particular news, say the third news, TCS is working with some Tata Electronics. You click on Tata Electronics, and once you click on Tata Electronics, everything about TCS will come here in one banner, and you can study the company further from that place. Then let's move to the right side on announcements. What is announcements? Announcements is those specific press releases or information that the company is willing to share. So they have to submit it to the stock exchanges, and we pull it directly from the stock exchanges. This is the most authentic piece of information that you can get. And how can I prove that? Anything that is here, for example, there is from Thermax Limited some announcement is there which is receipt of some new order. Okay, if you click it, it will directly take you to the letterhead of the company where they have made this information public. तो ये थर्मैक्स का लेटर हेड है जिसमें कंपनी बता रही है मुझे क्या नया ऑर्डर मिला है, क्या क्या डिटेल मिली है, जो एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन गई है एज इट इज पुल होके आपको दिख सकती है. ओके, so using news and announcements you can stay updated about what is happening in the overall markets. Then you have upcoming things. So there are upcoming corporate actions like bonus कौन सी कंपनी अनाउंस कर रखी है, dividend, rights issue. If you have to trade based on these, you keep an update that okay, this company has announced a bonus or a dividend or a rights issue. And then you have events which, as I said, is the forthcoming dates on which certain important international or national decisions are going to happen which may have an impact on the market. So if you want to closely track the markets, these are the events to follow. Similarly, if you go to results, there are two parts. One is किस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, and second is किस कंपनी का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, and what is the output of that. So upcoming results, if we click on upcoming results, this is the list of companies who are going to publish the results. अब ये लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और टेक वाले एक साथ आते हैं ना, तो some magic can happen. For example, many of us know, right? It's an open secret कि रिजल्ट्स आने के पहले मूवमेंट शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं? Because there may be information in the market. What we have done here is 1 week before, say how the stock has started moving. That also you can see and see for yourself कि ये अपकमिंग रिजल्ट भी है इस स्टॉक में और ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग गया है. देयर मे बी सम पॉजिटिव न्यूज अराउंड इट. ओके, देन वी हैव रिलीज रिजल्ट्स कि जिन कंपनीज ने रिसेंटली अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, इन 3 फैक्टर्स में उन्होंने क्या ग्रोथ आया है. सेल्स, हैज इट इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट. Now both these numbers of growth can be seen either on a quarter basis. For example, over first quarter, second quarter में कितना growth आ गया. अप्रैल में जून is first quarter,
जुलाई अगस्त सितंबर में मैं 20% ग्रो कर गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है सीजनल, जिसका थर्ड क्वार्टर बेटर होगा, फोर्थ क्वार्टर और बेटर होगा, फर्स्ट क्वार्टर डाउन होगा एवरी ईयर, बिकॉज इट्स अ सीजनल बिजनेस. इट मे हैव सम कनेक्शन विद, से एग्जांपल टी स्टॉक्स, राइट, वुड may move in a seasonal format because it is linked to agriculture. So for that you can also check year on year, which means this quarter's Q1 versus previous year's Q1, right? Depending on the company type or the sector type, you can look at both of these and look at the numbers, and then from here you can try and identify stocks. यहाँ देखिए 3 नंबर में you have Orient Technologies, जिसकी सेल्स 27% बढ़ी है, EBITDA 24% and net profit 30%, means higher growth, higher profits. This is a stock that I should start studying because it is giving me positive indication of a good stock, right? But this may not be the only information. You click it, go inside it, and then you can do full fundamental analysis कि stock का EPS क्या है, current market cap क्या है, what does the company do, what are the different levels, the historic results and all of this, right? And we'll take these screens separately, but the idea I'm trying to share कि a good result published today, I can immediately track out of these 20 companies, this is one company that I should start tracking and I can add it to my watch list. Once it is part of my watch list, I can spend some more time and do a detailed study and then decide if I need to participate in this. Then we have the FII-DII section, which is like one of the most popular features that Stockage has developed. Again, with the idea that whatever is available to larger companies, why can it become available to a normal individual like us? So what does FII-DII say? How much money are foreign investors putting in the Indian market? How much monies are large domestic institutions, which is DII, like the banks, mutual funds, insurance companies, how much money they are putting in the market? And that, if you see a gist of that, that gives you an idea of what is happening in the market. So on your daily tracking cycle, if you can just run through these 4-5 screens, you have an overall idea of where the markets are moving. And then we have futures, where you see open contracts, kitna position bana hua hai, by each participant type. FIIs ने कितने open holdings करके रखे हैं, open interest है, DII का क्या positions है, और pro जो मतलब prop trading जो desks हैं उनकी क्या positions है. This we can see for index and stocks. Similarly, we can see overall options में call और put का अलग अलग कितना open interest बना हुआ है. All of this, if you see, is plotted here in a heat map. Okay? डेटा को एनालाइज करने के लिए अगर विजुअल क्लूज मिल जाए तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत फास्ट हो जाता है. तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, बढ़ा घटा समझना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, बट इफ आई पुट अ कलर कोड, दैट हाई इंक्रीज आई पुट एज डार्क ग्रीन, लोअर इंक्रीज आई पुट एज लाइट ग्रीन, लोअर फॉल एज पिंक and higher fall as red. In the scale of red to green, if every number is represented as a color, right, now you try to interpret this screen. If you just scroll down, okay, you see there is a lot of green here and then earlier it was red. तो page down करते ही समझ में आ गया कि positive interest बन रहा है या negative interest बन रहा है by whatever we have selected on the top. तो ये put का आप देख रहे हैं, call का देख सकते हैं, client का देख सकते हैं. So you get an idea of the overall positions in the options market and positions in the future markets. Sir, if you can just add a line or two on how to use this data. I want to do that. Actually, I want to create a framework which will help everyone, because there are too many data points, okay? As sir has already mentioned that almost 1 billion data point. How do I, as an individual, try to create a framework around these data points for my journey, which could be for a short-term trading or a mid-term or a long-term trading? तो इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ डेटा पॉइंट 10,000 फीट के लिए रेलिवेंट है, कुछ डेटा पॉइंट 1000 फीट के लिए रेलिवेंट है, कुछ 100 फीट के लिए रेलिवेंट है. ओके, एंड व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग इन एनी स्टॉक, देयर आर सम डेटा पॉइंट्स व्हिच आर लाइक इमीडिएट डिसीजन मेकिंग डेटा पॉइंट. ये डेटा देख के मेरे को डिसीजन लेना है, ठीक है. अब ये 10,000 फीट का डिसीजन क्या हुआ कि दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या मुझे कंफर्ट दे रहा है, पॉजिटिव है, एफआईज इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कुछ कुछ पैरामीटर्स मैं यहाँ पर सपोज लिख ले रहा हूँ. तो पहला मैं लिख लिया कि यूएस डॉलर,
मैंने अपने आप को यूएस डॉलर को समर्पित कर रखा है, बिकॉज मैंने 19 साल से अपना एक्सपीरियंस देख लिया है कि यूएस डॉलर मोटा मोटी सब चीज बता देता है हमको जो हमको पता रहना चाहिए। तो पहला पैरामीटर हो गया मेरा यूएस डॉलर। दूसरा पैरामीटर हो गया कि इंडिया में जो एफआईआईस है, चाहे हम जितना भी कह दें कि रिटेलर बचा रखे हैं इंडिया को, एसआईपी सेविंग, बट एफआईआईस आर एफआईआईस है, दे आर पीपल विद बिग कैपिटल, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देयर पोजिशंस इन मार्केट। तो एफआईआईस क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब एफआईआईस के अंदर में या तो हम कैश मार्केट का उनका पोजीशन भी देखेंगे, हम डेरिवेटिव का ही पोजीशन देखेंगे। कैश मार्केट मीन्स वो लोग कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, विच इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर बाइंग कर रहे हैं तो मैं 1 कर दिया, राइट, और अगर वो सेल कर रहे हैं तो मैं -1 कर दिया। तो ये पूरा डिसीजन मेकिंग को ना हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे यूएस डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने 1 दे दिया, एफआई बाई कर रहे हैं कैश मार्केट में, हमने 1 दे दिया। एफआई डेरिवेटिव मार्केट में भी, विच इज फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बना रखें, 1 दे दिया। ऑप्शंस के अंदर में अगर पुट में ज्यादा पोजीशन है विजा विज कॉल, इसका मतलब एफआई पुट बेच के रखें ज्यादा, इसका मतलब तेजी का व्यू उनका भी है ऑप्शंस के अंदर में भी, तो हमने 1 दे दिया। तो अगर हम फैक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई कर दें तो ये डिसीजन मेकिंग ना एल्गोरिदम के थ्रू हो जाएगा, रादर देन वी ट्राइंग टू जज इंटरनली कि अरे ये भी तो क्या डिसीजन है, पता नहीं है क्या होगा। तो आप when you go back home, depending upon what kind of market participation you have, you can define data points and plug them as per the stages of your working. जैसे अब न्यूज़ है तो मैं जैसे न्यूज़ को देख के नहीं ट्रेड करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है न्यूज़ तो ऑलरेडी प्राइस में है ही, तो उसको अभी देख के क्या फ़ायदा है। पर हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि नहीं हमको तो न्यूज़ देखना ही है। तो न्यूज़ किस एस्पेक्ट में आएगा? मे बी न्यूज़ यहाँ आएगा कि 100 फीट का व्यू हम बनाएंगे, तब उसके अंदर में न्यूज़ का रिलेवेंस है, राइट। बिकॉज न्यूज़ का, जैसा कि सर ने दिखाया था प्रेजेंटेशन में भी, न्यूज़ का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है, न्यूज़ का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म न्यूज़ ऑलरेडी फाइनेंशियल्स के अंदर में या स्टॉक के प्राइस के लॉन्ग टर्म एक्शंस के अंदर में उसका इंपैक्ट आ जाता है, बट इमीडिएट जो प्राइस मूवमेंट होती है न्यूज़ का 5-6% का, वो शॉर्ट टर्म में आता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तब आप शायद न्यूज़ देखना चाहेंगे, बट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड करते हैं तो न्यूज़ को आप उतना वैल्यू नहीं देंगे जितना प्रॉब्ली अदर एस्पेक्ट्स को आप देना चाहेंगे। In that case, I think news is just for your knowledge enhancement. कि भाई मेरा स्टॉक है उसमें ये न्यूज़ आ गया है तो I must be aware of it. हाँ, your subconscious mind should Right. be feeded with those information. Correct. Yeah. Because अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो आपके माइंड में वो पिक्चर आ जाना चाहिए कि TCS ने ये भी किया था। Yeah. वो डेटा से मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट इट्स जस्ट माइंड मैपिंग। या